Hello everybody! This video is about how to create a boot flash drive to install Windows 10, 8 or 7. This procedure is necessary when your PC, laptop or netbook lacks a DVD drive or it doesn't work properly, if you have no system installation disk or you just don't like working with DVDs. There are many ways and methods to create a boot flash drive, but I will use only official methods. I'd like to note they are also the simplest. Here is the first method. All you need to create a boot flash drive is a computer with UEFI instead of BIOS and the system image itself. It should be noted that all modern computers support UEFI. To begin, go to the Explorer, right-click on the flash drive, and click on Format. Select the necessary file system, for example FAT32. Choose Quick Format and click Start. You will see a warning that all data will be deleted. Click OK and wait for the process to finish. After that, use the Explorer to open the disk or ISO image containing the installation package. Copy image files to the flash drive and wait until it is over. When the copying process is over, your boot flash drive is ready. Then restart your computer, go to UEFI, set the computer to boot from the flash drive, and install the operating system you need. The second method will be relevant if your computer has BIOS interface instead of UEFI. To create a boot flash drive, you will need official software by Microsoft, Windows 7 USB DVD Download Tool. You will find the link in the description of this video. Don't let the words Windows 7 worry you. This software is also good for Windows 8 and 10. To begin with, start the program. The first step is to select the system image file you need and click Next. The second step is to select the media type, in our case USB device. The third step is to select this flash drive from the list of all devices in your computer. In my case, it is disk W, and click Begin copying. You will see a warning that all data will be deleted. If you don't have any important files on this drive, click Erase USB device. Confirm your decision to delete all files and wait until the files are copied to your USB drive. When it is over, you will see a message Backup completed, which means the boot flash drive is ready to use. The third method is to create a boot drive with a command prompt started by the administrator. The advantage of this method is that you don't have to download and use any additional software, for example if you can't access the Internet, and your device will work with both BIOS and UEFI. To begin with, right-click on the Start menu and click on Command Prompt Administrator. Then enter the command disk port and then list disk. In the list of all disks installed in the computer, find the flash drive, in my case that is disk 5, and enter the command select disk 5, so all actions will affect this particular disk. At this stage you have to be very careful, because all data will be deleted from the selected disk. Then enter the command clean, which cleans the flash drive's partition table. We can see a report saying that disk cleanup was successful. Now create a partition on this flash drive with the command create partition primary. And enter select partition 1, that is, select this partition. Make it active with the command active. Format the flash drive in NTFS format with the command format fs
equals NTFS quick. And wait until the formatting process is 100% completed. Assign a drive letter, for example X, using the command assign letter equals X. And finish the work of disk part with the command exit. Close the command prompt and copy files from the image onto the flash drive as in the first method. When the copying process is over, your boot flash drive is ready. The fourth method is to use the utility Windows Media Creation tool to create a boot flash drive for Windows 8 or Windows 10. You will find download links in the description below this video. All you need is a working Windows 8 or 10, a 4 GB flash drive or bigger, and this utility. I will work with the example of Windows 10. To begin with, connect the USB drive to the computer and start the program. After you start the program, agree to the license agreement. Select Create a boot media for another computer. Use the necessary settings or recommended settings for this computer. Select USB flash memory device. Click on the necessary USB drive, in my case it is disk X, and click Next. After that, the process of creating a boot drive begins. When it is over, the boot drive is ready and you can use it. When testing all these methods on HP DC7800 computer, I had the following problem. BIOS recognized the flash drive and Windows booted from it, but froze in the first window. I could solve this problem only by updating its BIOS to the latest version. So, if you like this video, click the like button below and subscribe to our channel to see more. Thank you for watching and good luck! नमस्कार दोस्तों, माई टेक सपोर्ट में एक बार फिर से स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विंडोज़ की बूटेबल पेन ड्राइव किस तरह से बनाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यही दिखाऊंगा कि विंडो की बूटेबल पेन ड्राइव हम बना सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सीडी या डीवीडी हमारी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसे में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बूटेबल पेन ड्राइव होना ज़रूरी है। तो पेन ड्राइव को किस तरह से बूट करते हैं वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से बूटेबल पेन ड्राइव बनाई जाती है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं पावर ISO। फ्रेंड्स, पावर ISO सर्च करने के बाद आपके सामने देख सकते हैं काफ़ी सारे रिजल्ट आ गए हैं। तो जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आ रहा है, जो पावर ISO की मेन वेबसाइट है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं इसकी मेन वेबसाइट खुल चुकी है और इस पर यहाँ आपको दो सेटअप दिखाई देंगे, जिसमें एक 64 बिट का है और एक 32 बिट का। क्योंकि फ्रेंड्स, जो 64 बिट वाले हैं तो उनके लिए 64 बिट का अलग दिया हुआ है, जो 32 बिट वाले हैं उनके लिए 32 बिट का अलग दिया हुआ। तो फ्रेंड्स, आपका जो भी पीसी है 32 बिट या 64 बिट, उसके हिसाब से आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। मैं पहले ही डाउनलोड कर चुका हूँ और इंस्टॉल भी कर चुका हूँ, तो आप यहाँ से डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए। तो उसके बाद आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे पावर ISO का आइकॉन आ गया। तो अब मैं इस पर डायरेक्टली क्लिक कर लेता हूँ। और इस पर क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ इस तरह से इंटरफेस है इस सॉफ्टवेयर का। तो ये सॉफ्टवेयर जो है, ये अनरजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर है, हमें इसे परचेज करना पड़ता है, लेकिन हम छोटे मोटे कामों के लिए इसे परचेज नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम कंटिन्यू अनरजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जिसमें आपको टूल दिखाई दे रहा है, आपको 4th नंबर पे आप टूल पे क्लिक कर दीजिए।
तो यहाँ जैसे ही हमने टूल पे क्लिक किया है उसके सामने काफ़ी सारी लिस्ट आ गई है और लिस्ट में एक जगह आपको दिखाई देता होगा क्रिएट बूटेबल यूएसबी। तो फ्रेंड्स जो क्रिएट बूटेबल यूएसबी है, हम इसी पर क्लिक करना है। तो चलिए अब इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से बूटेबल पेन ड्राइव बनाई जाएगी। तो हमने जैसे इस पर क्लिक किया है आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स की परमिशन की ज़रूरत है, तो यहाँ से हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स आपके सामने फिर वही पेज खुल जाएगा। तो इसमें आपको फिर वही कंटिन्यू अनरजिस्टर पर क्लिक करना है। तो यहाँ से इस पर क्लिक कर देते हैं उसके सामने, और इसके बाद अब आपके सामने एक पेज खुल के आया है जिसमें अब आपको जो भी आपकी विंडोज़ है तो उसकी आईएसओ इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और अब आप अपनी पेन ड्राइव या जो भी आपकी यूएसबी पेन ड्राइव है उसको कंप्यूटर में लगा दीजिए। तो यहाँ से अब मैं एक आईएसओ इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको आईएसओ इमेज बनाना नहीं आती तो फ्रेंड्स उसके लिए मेरी दूसरी वीडियो है, आप उसको देख लीजिए। उसमें मैंने बताया कि किस तरह से हम विंडोज़ की आईएसओ इमेज बना सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स विंडोज़ कॉपी करके नहीं होता है, उसकी आईएसओ इमेज बनानी पड़ती है, तभी वो दूसरी सीडी या फिर पेन ड्राइव में हम उसे बूटेबल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं एक इमेज मैंने सिलेक्ट कर लिया है विंडोज़ 7 का, और जो नीचे आप देख रहे हैं दूसरा ऑप्शन, तो इसमें हमारी जो भी पेन ड्राइव हमने अपनी यूएसबी पेन ड्राइव लगाई है वो यहाँ पर डिटेक्ट होगी। अगर डिटेक्ट ना हो तो आप जो बराबर में रिफ्रेश का आइकॉन है उस पर क्लिक कर दीजिए, और इसके बाद अब आप स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर एक ऑप्शन है, तो फिर आप इस पर ओके कर दीजिए। अब फ्रेंड यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, हमारी जो भी पेन ड्राइव थी वो विंडोज़ बूटेबल होना स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इसमें तो काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स जिस तरीके का आपका सिस्टम है, किस तरह की स्पीड है, कौन सा है, उसके हिसाब से यहाँ पर स्पीड आएगी। तो यहाँ से इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा स्किप कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ लास्ट का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये बूटेबल यूएसबी बन चुकी है। तो अब इस पर यहाँ से क्लिक कर दीजिए और इस सब को क्लोज कर दीजिए। और आप देख लेते हैं फ्रेंड कि हमारी जो भी यूएसबी थी वो बूटेबल हुई है या नहीं हुई है। तो हम माई कंप्यूटर में जाके देख लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर आपके सामने विंडो का आइकॉन आ जाए उस पर बन के, तो समझ लीजिए कि वो पेन ड्राइव बूटेबल हो चुकी है। अगर वहाँ पर आइकॉन नहीं आता है तो इसका मतलब वो पेन ड्राइव ठीक से बूटेबल विंडो नहीं बन पाई है। तो फ्रेंड्स यहाँ तो फ़िलहाल ये विंडो बिल्कुल ठीक तरीके से बन चुकी है। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू। Several weeks ago, I made a video on how to create Windows 10 bootable USB flash drives with Windows 10 Preview. Now, the link to Windows 10 Preview isn't available anymore because, of course, the official release happened on July 29, a few days ago. So here's some new method, because Windows 10 download tool that Microsoft created when the Windows 10 officially released also has a tool that can create bootable USB flash drives of the official release of Windows 10. So if you ever want to do a clean installation, first you want to go to this PC, right-click Properties, check your system type. I have a 64-bit operating system. And this clean installation works if you already have a product key. So if you've already upgraded it to Windows 10 and later on you want to do a clean installation of Windows 10, then this is how you do it. So with the download tool, after you download it, you can click on the executable, open it up, and we will use the download tool to create a bootable USB flash drive. So there are two options. You should select the clean installation media for another PC, because I'm assuming that you're doing a clean installation after you've gotten Windows 10 and you just want to do a complete clean install after you've gotten Windows 10 for the first time. So there are some settings that you can do for language, architecture, and also system type. We'll select 64-bit Windows 10 Pro. And then we hit next. Now for the media to use, we will choose a USB flash drive, and it needs to be at least 3 gigabytes. You can insert your USB flash drive right now.
After inserting your USB flash drive, your computer should detect it and you can mess around with USB flash drive. So there will be options to select your removable drives, and to double check and make sure that you're selecting the correct removable drive, go to your File Explorer and right click on the removable disk drive letter that you think is the right one, and just double check the gigabytes to make sure that it is how much you think it is. For example, if I use a 16 gig USB flash drive, roughly 15 gigabyte capacity. And remember that everything on this USB flash drive will be formatted. After you click on the device, hit next, and the program will start downloading Windows 10. And then afterward, it will immediately start installing Windows 10 on the bootable USB flash drive. So the whole entire process might take an hour or so because you have to first download the 4 or 3.5 gigabyte file, and then afterwards it installs it onto the device. So I skipped through the whole video just to get to the final point where the USB flash drive is ready and completed. And then afterwards you can hit finish. So after hitting finish, one thing that you want to do before you restart is go to settings and search for activation. Make sure that your Windows 10 is activated. For example, if I zoom in over here, I already have Windows 10 Pro and the activation key has been activated since I upgraded from Windows 8.1 to Windows 10, and I had an activated key. But now we need to get the product key from this already activated Windows 10. If we paste a script in Notepad, save as, make sure that the type is all files, and save it as product-key.vbs. This VB script is used to get the product key because there's no easy way to get the product key from your Windows 10 installation. So by saving this script by double clicking will show our 25 character product key. So by double clicking the script that we just created, it shows a window with our 25 character product key. So with this product key, when we do the clean installation of Windows 10, we already have the valid product key because we took advantage of that 1 year period where Windows 10 was free. Now, you get the official product key after you first do this for the first time of the upgrade, but later on you might want to do a clean installation. At the properties for your disk drive, just eject it and restart your computer and we'll clean install Windows 10. When you restart your computer, you want to make sure that your USB flash drive is in your computer and hit F12. F12 is the button for most Windows computers that allows it to get to the boot menu. And inside the boot menu, you can boot into any device, and we will boot into the USB storage device. At the USB storage device, setup afterwards will be normal, and it's similar to Windows 7 and Windows 8. Setup will just ask you for your English, your language settings, and afterwards you just hit next a couple times, and then you enter your product key. So this video is more showing you not how to get a cracked product key, but currently, if you ever want to do a clean installation, you've already upgraded to Windows 10, you have an official product key because you did the free upgrade, then you can use that product key again for future clean installations of Windows 10. And that's what I basically showed you. I showed you how to get your product key, how to use the Microsoft official download tool to create an installation of a bootable USB flash drive of Windows 10, and how to get that product key. And now, afterwards, you just go through the setup, and it will prompt you for a product key, and then you enter that product key that you used from the script that I showed you. I'll leave all the links in the description. Thanks for watching.